Welcome everybody, all my dear students. Today we are going to analysis a chapter of class 9, gravitation. What do we mean by gravitation? What is gravitational force? Gravitation universal constant and gravitation of earth, gravitation acceleration due to gravity or gravitational force due to earth. First, all we know that about force, everything force, it is a character, it is a external agent which change the state of rest or motion. Any object, we need a force to move it if it is in rest, to change the direction if it is in rest or motion. Even a motion object, due to external force, it will may change its state of motion. That means force is absolutely needed to change the state of motion or state of rest. Object upare external force apply न कले object रो state न्यूटन्स लॉ रो आने पड़ी object रो state change होने. That means if it is in rest, it will continue to rest. If it is in motion, it will continue to motion. If it is in motion, it will continue to motion in a straight line. But now another thing, gravitation. What is gravitation? What is gravitation? Gravitation विषय जानिया पूर्व आमे डेली लाइफ रे आमे देखंती if we take something and dropped it from height, किसी हाइट रू गोटे ऑब्जेक्ट को आमे ड्रॉप करते हैं विदाउट एनी अप्लाइड फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स अर्थ. दैट मीन्स इट इंडिकेट्स गोटे ऑब्जेक्ट जितेबाला किसी हाइट रू तल को ड्रॉप करा जाउची, नेचुरली ये अर्थ को पड़े जाउची. इट इज ए टेंडेंसी each and every object. Earth attract each and every object towards its center. It's a gravitational force of attraction for every object. Due to Earth रो gravity, each and every object को center आड़े ऑब्जेक्ट रो सेंटर, ऑब्जेक्ट जोठी अर्थ पे पड़ुची सेटा होची ऑब्जेक्ट रो सेंटर, से सेंटर आड़े को से अट्रैक्ट कर. इट इज ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी और ड्यू टू अर्थ. इट इज अट्रैक्शन फोर्स ऑफ ग्रेविटी. दैट मीन्स ग्रेविटी अट्रैक्ट ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर. इट इज द अर्थ इटसेल्फ अट्रैक्ट ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट. सिमिलरली another force of gravitation, earth even attract moon. Moon revolves around the earth, just like earth, other 8 planets revolves around the sun. It is the universal law. Sun is a star, there are 8 planets revolve around the sun. Without any force of attraction or without any force, it will not possible to rotate in a particular path. जिते सब प्लानेट्स रही पर्टिकुलर पाथ रे सन चारि रोटेट कर. इवन गोटे इंच से माने पाथ हटू ना. हाउ इज इट पॉसिबल? केमती यह संभव हो? इट इज ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स. दिस फोर्स ऑल्सो यूनिवर्सल gravitation force or gravitational force. Similarly,
all satellites revolves around the planet चारिपटे सब सैटेलाइट घुरुचंती विदाउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रे विदाउट एनी फोर्स रे एठी कौन सी गोटे सैटेलाइट प्लानेट चारिपटे घुरिबा और प्लानेट स्टार चारिपटे घुरिबा कंटिन्यूअसली जेबेठारु सन अर्थ अकॉर्डिंग टू साइंस अबाउट 500 करोड़ 500 इयर्स 500 कोटी वर्ष है सन तार प्लानेट्स एंड सैटेलाइट्स फॉर्मेशन होती आउ सेबेठारु सन चारिपटे प्लानेट माने सॉरी हाँ प्लानेट माने और प्लानेट चारिपटे सैटेलाइट माने रिवॉल्व्स राउंड करुछंती यूनिवर्सल it is a wonderful because it is impossible to calculate or to see with our naked eye कारण यूनिवर्सल जिनस फार डिस्टेंस आमठू अच्छी 15 कोर किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन 15 कोटी किलोमीटर दूर रे सन अच्छी तेणु सेठी अदर प्लानेट्स जो अच्छा सैटेलाइट्स जो अच्छा ताकू जाकि देखा ता पोजिशन को वेरीफाई करवा इज क्वाइट इम्पॉसिबल किंतु इट इज श्योर गोटे रज्जु दैट मीन्स ए अट्रैक्शन फोर्स बांधिकी रखी ऑल द सैटेलाइट्स ऑल द प्लानेट्स सन इज हेड ऑफ दिस सिस्टम से सिस्टम सन हेड और सोलार फैमिली सन इज हेड आउ अट्रैक्शन फोर्स बाइंड कर रखी ऑल प्लानेट्स और सैटेलाइट्स यहाँ तो कन्फर्म कहीं ना कहीं के तार कक्षपथर विच्युत होनी दैट मीन्स ऑल आर रिवॉल्व्स राउंड देयर ओरिजिनल पाथ रू कहीं हटुनी अकॉर्डिंग टू साइंस इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स बाइंड्स ऑल द प्लानेट एंड सैटेलाइट्स टुगेदर समस्ते गोटे फैमिली दे होल्ड टुगेदर नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट ऑल वी नो दैट वंस न्यूटन वाज सिटिंग अंडर एन एप्पल ट्री गोटे एप्पल ट्री अंडर द एप्पल ट्री तले बसी थे an apple fell onto him तांको ऊपर पड़ेगा he thought himself why for who attract the apple towards the earth को apple को के attract कला earth आड़ को आसला apple कहीं से ऊपर को पड़ेगा it was the question himself he found that the force of gravity an attraction force attract each and every object towards the center. That's why apple earth attraction है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहूँ each and every object universe in this universe attract each other ए यूनिवर्स रे एवरी ऑब्जेक्ट परस्पर को अट्रैक्शन कर एक क्वेश्चन arises if attract apple earth attract the apple towards center is it possible apple attract the earth apple द्वारा अर्थ अट्रैक्ट हो सिमिलरली अर्थ अट्रैक्ट द मून अट्रैक्ट द अर्थ कहीं apple को जिते टाणी आनला अर्थ सेंटर को कहीं मून को टाणी आने इज इट पॉसिबल मून फॉल ऑन द अर्थ उपर मून आसी पड़ो नो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एप्पल इज वेरी नियर टू सेंटर ऑफ द अर्थ रो इनसाइड रे अच्छी अर्थ रु डिस्टेंस कम अच्छी एंड वेरी स्मॉल कंपैरेटिवली अर्थ ठारू एप्पल रो मास कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल आउ distance is very small, that's why earth attract the apple, but moon is 3,84,000 kilometers far and it is a huge object, that's why earth will not attract the moon
towards its center, but there is an attraction force which binds the moon. This force is called centripetal force. All we know about centripetal force. Another chapter रे हमें centripetal force विषय पढ़ी. It is center asking force. That means if this is a circular path, it is a center, a thread, what a thread रे हमें stone टा को tie करते हैं, stone टा बंधा है. A person hold the string. This is your thread or string. String को से धरी छी. आउ rotate करूँ the stone in a circular path. Circular path रे stone rotate करूँ. Due to this centripetal force, here it is. A centripetal or center acting force able to rotate the stone. Stone rotate करती है central acting force द्वारा. This force is centripetal force. यही force द्वारा अर्थ मून बांधे जाती. गोटे राज्य गोटे थ्रेड रे आउ अर्थ चारिपटे रिवॉल्व डाउन करूची मून. This center asking or centripetal force less amount is not a strong force but able to rotate the moon around the earth. Center action force, centripetal force. This is your person hold the string and rotating. This stone rotates around the center. If he will be free or not hold longer, जदि आउ अधिक समय पाई से ताको होल्ड न करे छाड़ी दिए ताले कौन हम with a tangent the stone will go just straight line. What a straight line tangent करके सर्कल सहित पड़े छिटकी. Without this centripetal force जतबेले आउ काम करबनी, the centripetal force does not work, the stone will goes with a straight line making a tangent. कहाँ सहित tangent करिबो रेडियस सहित. एठी गोटे 90 डिग्री एंगल फॉर्मेशन करके पड़े जिवो के स्टोन टा पड़े 90 डिग्री एंगल. In this way centripetal force ताको ही बाइंड करके रखिछि. ए सेंट्रिपिटल फोर्स वर्क न कले, सेंट्रिपिटल फोर्स रु स्टोन टा फ्री है गले, इट विल गोज इन स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल और टैंजेंट. ए टैंजेंट मीन्स सेंटर सहित 90 डिग्री एंगल कर, सेंटर सहित 90 डिग्री एंगल कर पड़े. ताले आठ और मून भीतर जमती सेंट्रिपिटल फोर्स वर्क करूची सिमिलर वे सन और अर्थ. सन चारिपटे if it is a sun, here it is earth, it is sun, it is earth. Also there is a centripetal force hold sun and earth together. Similar way sun सहित other planet सेमानकर मध्य center action or centripetal force होइछि and they revolves around the sun. Do you understood? It is the action of centripetal force. Now we are going to discuss about gravitational force or universal law of gravitation. Universal law of gravitation. Universal law of gravitation.
It is denoted by letter capital G. Universal law of gravitation entire universe रे काम करूଛି entire universe रे काम करूଛି universal law of gravitation ए यूनिवर्स विश्व ब्रह्मांड यूनिवर्स रे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करूଛି according to this force object in the universe attract every other object विश्व ब्रह्मांड रे जिते सब वस्तु अछंती आर्थ भितर थाउ आर्थ बाहर थाउ आर्थ भितर जे रही आर्थ सिकिंग फोर्स सेंटर आर्थ भितर आर्थर ग्राविटी ताकू अट्राक्ट करूची बट आर्थ बाहर जे विश्व ब्रह्मांड ऑल अराउंड सेमानक भितर गोटे अट्राक्शन फोर्स रही दिस फोर्स इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अकॉर्डिंग टू दिस फोर्स each and every object attracts each other with a force which is proportional to what is the value of this force. Value of this force. Universal force of attraction F proportional to product of their masses. Product of their mass. And inversely proportional to distance between them, that means 1 by d square. It is the force of universal law of gravitation. Universal law of gravitation states that each and every object attracts each other, each and every object inside this universe, not only inside this earth रे नो यूनिवर्स विश्व ब्रह्मांड रे जते सारे ऑब्जेक्ट्स अछंती अट्रैक्ट इच अदर परस्पर प्रत्येक को अट्रैक्ट करछन अट्रैक्ट इच अदर with a force. This force of attraction is called universal law of gravitation. According to this law, the attraction force between two objects is always proportional to the product of their masses, and inversely proportional. It is directly proportional. Directly proportional to product of their masses, inversely proportional to distance between them, inversely proportional to distance between them, square of a distance between them, not only inversely proportional to square of a distance between them. Now we are going to find out the mathematical calculation or mathematical formula of capital G, universal law of gravitation denoted by letter capital G. This is a force. Now we are mathematical calculation. Let there are two objects named A and B. Two objects A and B. Distance between their center is D. Let two objects A and B, two objects. Distance between their center. Distance between their center D. Mass of A is capital N. Mass of B is small n. Mass of A is capital N. Mass of B is small n. D is distance between their center. Now, the force of attraction between two objects, force of attraction according to universal law of gravitation, according to
according to universal law of gravitation. The attraction force between these two objects, universal according to universal law of gravitation. The attraction according to universal law of gravitation. The attraction force between them. The force between two objects. The force between two objects. F directly proportional to product of their masses. M into small m. Equation number 1. M, capital M, mass of object A. Small m, mass of object B. Directly proportional to product of their masses. Capital M, small m. Similarly, AB is inversely proportional to square of a distance between them. Equation number 2. AB is directly proportional product of their masses. AB is inversely proportional distance between them by taking together two equations from equation 1 and 2. From equation 1 and 2, F is proportional to F into L into 1 by d square. That implies F equal to G into capital M small m by d square. If you will take together first and second equation, we will get F proportional to capital M small m, product mass of two objects into 1 by d square, square of a distance between them. Here F equal to जेतेबेले भी आम proportional to चिन्ह उठे दिखती गोटे constant दिया जाए. This is called constant G. What do we mean by G? G कौन? G equal to universal constant. G is universal constant. G is constant, proportional or called universal gravitation constant. Universal gravitation constant. Universal gravitation constant. Now F into d square equal to capital G into capital M into small m. Now we are going to find out value of G, capital G. A universal gravitation constant ro value are going F into d square by capital M into small m equal to G. F into d square divided by capital M into small m equal to G. By substituting value of M and capital M and small m, also D, we will get G equal to substitute करके value कहाँ value mass of the object रो mass जैसे सब object आने नहीं जाती था object रो आउ distance we will get G equal to 6.673 into 10 to the power minus 11 Newton, which is Newton force, Newton d the square meter square divided by kg square. Otherwise G equal to 6.673 into 10 to the power minus 11 Newton
meter square kg square. The value of capital G. This value is very small value. Attraction force is very less attraction force, but it attracts each and every object inside the universe. যদিও সেই ফোর্সটা গোটে small value, but this force attracts each and every object inside this universe. How a universal force বা universal constant বা universal force of attraction যোগু यूनिवर्स विश्व ब्रह्मांड जिते सारे हेवेनली ऑब्जेक्ट रही पोजिशन रे बरकरार रही अर्थात पोजिशन नु कहीं भी केवे डिस्टेंस को चली जाऊनी स्थान परिवर्तन करूना G equal to 6.73 to 10 to the power -11 न्यूटन को भेसा फोर्स यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर को भेसा d डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट भीतर जो डिस्टेंस तेला d सेंटर तो डिस्टेंस से d हैला मीटर स्क्वायर बाय मास एंड मास डबल dटा ऑब्जेक्ट रो मास kg into kg k0 स्क्वायर है ऊपर वाले k0 स्क्वायर इन मास नाउ वी आर गोइंग टू solve an example. One example I solve करूँगी. Example. 1. The mass of the earth is mass of earth. Mass of earth 6 into 10 to the power 24 kg. It is given mass of the earth. And that of a moon, mass of a moon is 7.4 into 10 to the power 22 kg. That means M1 M2 but capital M small m माने पाई moon. Distance between them then 3.84 into 10 to the power 5 kilometer. 3,84,000 kilometer. Distance between this is your earth, this is your moon. Comparatively moon to get earth से छोटा. A distance 3.84 into 10 to the 5 kilometer. It is the mass of earth. It is your earth, it is your moon. It is mass of moon. Now we are going to G equal to 6.7 into 10 to the power 11 minus 11 Newton meter square kg square. Calculate the force exerted by the earth on the moon. Calculate the attraction force between. We are going to calculate force of attraction. What force of attraction of earth attract the moon? How can we calculate it? We are going to calculate F. We know that F equal to capital G, capital L into small l divided by d square. By substituting the value, substitute kariba capital M, mass of the earth, small m, mass of the moon, d, distance between them. By substituting the value, first G 6.7 into 10 to the minus 11 Newton meter square kg square. Inverse into earth of mass 6 into 10 to the power 24 kg into mass of the moon
7.4 into 10 to the power 22 kg divided by d square, distance between them, distance 3,84,000, 3,84, 3.84 into 10 to the power 5 square, that equal to, it is a very long division and multiplication. It is not possible for anyone to calculate so easily, but calculation value खाली we will remember it, 2.02 into 10 to the power 20 Newton. It is the attraction force between Earth and the Moon. The attraction force which bind together Earth and the Moon is this force. How much? 2.02 into 10 to the power 20 Newton. Now we are going to discuss what is the importance of this force of attraction of G, universal force of attraction or capital G, denoted by letter capital G. Capital G, 6 point, you can take 6.7 into capital G, value of actually capital G रो value हमें या put 6.673 into 10 to the power minus 11, or it is 6.7 into 10 to the power minus 11 Newton meter square kg square. This is due to this force of attraction. Due to this force of attraction, the force that bind us to the earth. Earth भितरे आमे जो बांधे की रही अर्थ रु आमे खसी पड़ूना अर्थ पर घर द्वार कोई रही अर्थ जो फोर्स अट्राक्शन फोर्स फील हो मून उपरे अर्थ जो अट्राक्शन फोर्स एक्सर्ट करुची इट इज ड्यू टू द यूनिवर्सल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दिस G. That means due to this universal force, but this universal force bind us to the earth. Earth से तो बांधी रखी. The motion of a moon around the earth also possible due to this force of attraction. Earth चारिपटे moon जो revolves round करूची. It is due to this force of attraction. It is the use of this force. Another fact, the motion of a planets around the sun. मुझे आप लोगों को तो मुझे motion of a planets around the sun. Sun चारिपटे जो planet गुड़ा का motion होची. It is also due to this force of attraction. Similarly, the tides due to the moon and the sun, a attraction force. Tide जो ज्वार समुद्र जो ज्वार it is also due to this force of attraction. This force of, that means the force of attraction, universal force of attraction is very important. Is very important for us. Not for Earth. It is very important for all the universe. सारा विश्व ब्रह्मांड रे a force of attraction अच्छी. So it is very important for our universe, for our Earth. और यूनिवर्स जो कहते अदर प्लानेट से काम करुच्ची. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर थिंग्स, फ्री फॉल. व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? फ्री फॉल कौन? तार ओडिया हो मुक्त पतन. फ्रीली जदि गोटे ऑब्जेक्ट फॉल होची ताकू कौनसी ऑब्स्टैकल रेजिस्ट करूनी, ताकू गोटे ऑब्जेक्ट किसी हाइट रे अछि फ्रीली आसिक ग्राउंड टच करुच्ची, ग्राउंड पड़ जाऊँ. दिस इज योर फ्री फॉल. सिमिलरली गोटे गछ
That's what a fruit. Ground as suppose. It is also free fall. Free fall means the object towards the earth, falling towards the earth freely, without any resistance, without any resist, without any obstacle. कौन सी obstacle बिना गोटे ऑब्जेक्ट फ्रीली जदि अर्थ आसी फल होची इज कॉल्ड फ्री फॉल। ए फ्री फॉल रे अट्रैक्शन फोर्स काम करे ग्रेविटी रो। ग्रेविटी ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करे। आ ग्रेविटी आड़ को जो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट है क्या आसुची दैट इज योर we know that F equal to ma force. F force equal to m into a. What is m? Mass of the object. What is a? Acceleration due to gravity. Newton's second law. First law, law of inertia. Second law, force. What is force? Force equal to mass into acceleration. But due to gravitation, the gravitational force F equal to m into g. This is small g. What is this small g? This is same as acceleration. It is acceleration due to gravity. G equal to A equal to acceleration simply. A is the acceleration. What is G? G equal to acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. That means गोटे फ्री फॉल ऑब्जेक्ट उपरे एम जी ही काम करुच्ची ए रिप्लेस होची जी को कहीं एक्सीलरेशन मीन्स इट इज ड्यू टू ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट को जो ग्रेविटी अट्राक्ट करुच्ची से ग्रेविटी अंडर को पड़ी आसुची आ ग्रेविटी तापर फोर्स अप्लाई करुथिबारु फ्री फॉल ऑब्जेक्ट रे ग्रेविटी ही काम करुच्ची। एफ इक्वल टू एम जी होची दैट इम्प्लाइज एफ इक्वल टू first F equal to ma, then F equal to mg. But according to force of universal law of attraction, universal law of attraction of force, F equal to capital G, capital N, small n by d square. Just before या पूर्व जस्ट आने फोर्स ऑफ यूनिवर्सल फोर्स ऑफ ग्रेविटी रे हमें एफ को कैलकुलेशन करेंगे। इट इज दैट मीन्स डी शेप रिमेन सेम। दैट मीन्स एम जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन बाई डी स्क्वायर। हियर स्मॉल एन कैंसल। जी इक्वल टू capital G, capital M by d square. It is the acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. mg. m cancel होगा G equal to capital G, capital M by d square. By substituting the value of capital G कहते that means small g equal to value of capital G 6.7 into 10 to the power minus 11 Newton meter square get the square inverse capital G into mass m mass of the earth 6 into 10 to the power 24 kg divided by d square radius d equal to radius of earth 6.4 into 10 to the power 6 meter square. It is also very long multiplication and division, but after simplifying we will get g equal to 9.8 meter square inverse. Sorry, meter second square inverse. Approximate the value of g equal to
10 मीटर स्क्वायर आउ थे मुझे वैल्यू ऑफ g वैल्यू ऑफ n वैल्यू ऑफ d ये लिखी व्हाट इज d हियर d is equal to r what is r radius of r स्मॉल g अट्रैक्शन फोर्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ताको कैलकुलेशन कला बेले डी जगह रे आमे आई पुट करते अगेन लिसन टू मी राइट द वैल्यूज ऑफ कैपिटल G कैपिटल N R ए कैपिटल G कौन ग्रेविटी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूनिवर्सल कांस्टेंट 6.7 into 10 to the power 6 आम पुट करते जो वैल्यू पुट करके जीरो जो वैल्यू बाहर करते 6.7 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर मास ऑफ अर्थ 6 into 10 to the power 24 kg radius of earth 6.4 into 10 to the 6 meter. You will remember this. Then how much G? Substituting this value G equal to 9.8 meter second square inverse G equal to approximately we will take it as 10 मैथमेटिकल कैलकुलेशन रे हमें बोथ यूज कर पारिबा 9.8 एंड 10 बोथ यूज कर पारिबा इट इज द लास्ट ऑफ एंड ऑफ दिस क्लास जहाँ सब डिस्कसन कले भल भाव ध्यान सह तुम पढ़ बुझ दो इट इज वेरी डिफिकल्ट बट प्रैक्टिस कले ये सब जिनस रिमेम्बर कले अगेन एंड अगेन वी विल एबल टू अंडरस्टैंड इट और नेक्स्ट पार्ट 2 रे रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर ये चैप्टर रेस्ट थ्रू आम पार्ट 2 गोटे वीडियो मुझे खूब शीघ्र तुम शेयर करी कौन बुझीपार न बुझीपार मत कमेंट जनइब आउ लाइक सब्सक्राइब भी कर चैनल बाय थैंक यू।